Good morning, students. How are you all? As you all know that the holidays are going on, and this time is very crucial for all of us because you know about the disease that it's going on, and it's affecting human health very much. So please be home, be safe, and follow every precaution given by the government or your parents. Please follow that. Wear masks. Don't go out and. Wash your hands again and again, and please be safe. So I'm here today as the holidays are going on, so I want to discuss something about soil. Okay, as you all know, soil, you know the name of soil. Anyone knows what is soil? Soil किसको कहते हैं हम? Soil क्या होता है? What is soil? So soil is something in which plants grow. You all have seen a garden, and you all have seen plants, and in garden you have seen plants growing. So where does those plants grow? Those plants grow in soil. गार्डन में आप प्लांट्स देखते हो तो वो कहाँ ग्रो करते हैं? वो प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर, राइट? So today we'll study about soil, what it is made up of, and how it is formed, and different types of soils, about soil erosion, and how does soil gets eroded. We'll study about all these things today. Okay. So first of all, I have told you what is soil. So now I'll tell you about what it is made up of. Okay. Guess something that what is soil made up of? What you all have seen soil. Then guess what it is made up of. What all things contain are there in soil? It contains dry leaves, small twigs, and small pieces of stones, and sand, some clay, right? And it also contains dead plants and animals. It also contains the remains of dead plants and animals. Soil के अंदर जो डेड प्लांट होते हैं, जो मर जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, प्लांट्स, लीव्स, एनिमल्स, सॉइल के अंदर वो भी मिक्सअप हो जाते हैं और ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. फर्टाइल मतलब फिट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. फर्टाइल मतलब होता है कि बहुत अच्छा, जिसके अंदर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, वैसा बनाते हैं. ओके. सो इट इज़ मेड अप ऑफ लीव्स एंड स्मॉल ट्विग्स, स्मॉल लीव्स, and it is made up of small stones, clay, sand, and dead remains of plants and animals. Okay. So this is this we have studied about how it is made. No, what does soil contain? Yeah. And now we will talk about why it is important. Soil हमारे लिए important क्यों है इतना? क्यों हमारे लिए इतना important है soil? Soil हमारे लिए इसलिए इतना important है क्योंकि ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, बिकॉज इसी के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे. प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, फूड कहाँ से मिलेगा. सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ओके. सॉइल की वजह से ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, और प्लांट्स ग्रो करते हैं तभी हम जिंदा रह पाते हैं. ओके. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट एज वेल एज फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके. देन कम्स अबाउट, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज सॉइल, व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, है ना? नो, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. वी हैव व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. अब ये बनता कैसे है? हमने ये तो पढ़ लिया ये बनता इस चीज़ से है, लेकिन कैसे बनता है? इतने छोटे छोटे टुकड़े सैंड के और क्ले के, और इतने छोटे छोटे टुकड़े कैसे हो जाते हैं? ये होते हैं रॉक से. ये बनता है रॉक से. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, एंड the soil formation process takes a long time. It is not a matter of 1 hour or 1 day or 1 week, 1 year or 1 month. It took thousands of years to form a single layer of soil. A very thin layer of soil. It takes thousands of years to form. Okay. Soil is formed by wearing of stones and rocks by wind and water. ठीक है. तो सॉइल कैसे बनता है? जैसे कि माउंटेन पे रॉक्स हैं, अब वो ऊपर से नीचे गिरेंगे और क्या होगा? धीरे धीरे आके इतने बड़े से इतने छोटे होंगे, देन इतने छोटे होंगे, देन इतने छोटे होंगे,
और धीरे धीरे करके वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद एक छोटा सा पार्टिकल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉइल. ओके, सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ नेचर. इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड. इसे स्टॉप नहीं कर सकते हम. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इट forms again and again, but it took very very long to form. So there is a need to conserve soil. कंजर्व मतलब बचा के रखना. हमें सॉइल को ख़राब नहीं करना चाहिए, वेस्ट ख़राब नहीं करना चाहिए, हमें इसको बचा के रखना है. अगर हम इसको बचा के नहीं रखेंगे तो ये बहुत लॉन्ग टाइम लेता है फॉर्म होने के लिए. तो हमें सॉइल नहीं मिलेगी फर्टाइल लेयर, तो हम प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे अपने, राइट. नाउ this is how the soil is formed. Now we'll talk about different types of soils. Different types मतलब अलग अलग types होते हैं soil के. First is gravel, in which there are small stones, and second one is our sand, which contains small particles, right, and they are very dry. Mostly we found sand in desert areas, right. And then we talk about clay. It's very sticky. When it's get wet, it becomes very sticky. Okay, and particles are very fine. And you all know that when dead plants and remains of dead plants and leaves and clay, sand, they all mixes together, they form a soil type called loam. And loam is the best soil, is the very fertile soil for the growth of plants and animals, for the growth of plants, sorry. Okay, for the growth of plants. Okay, and now have you okay, now I'll tell you something about soil erosion. What do you mean by erosion? Erosion क्या होता है? Erosion मतलब होता है खराब हो जाना, सॉइल का ख़त्म हो जाना, इरोड हो जाना, ठीक है. तो have you ever seen a running water on a muddy ground? Have you ever seen running water? क्या होता है, जब पानी बहता है तो अपने साथ सॉइल को लेके बहता है, राइट. इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल की लेयर है वो पानी के साथ बह रही है, मतलब वो ख़राब हो रही है, उसमें प्लांट्स तो ग्रो नहीं कर सकते ना. दैट मीन्स सॉइल इज़ गेटिंग इरोडेड. सॉइल ख़राब हो रहा है हमारा, तो हमें इसको इरोड होने से बचाना है. वी हैव टू टेक सर्टन स्टेप्स सो दैट इट कुड नॉट बी इरोडेड, इट कुड नॉट इरोड, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो आई विल टेल you some causes, how it gets eroded, how soil gets eroded. Soil can get eroded by floods. या तो फ्लड आ गए, बाढ़ आ गई, पानी भर गया पूरे में, पूरा सॉइल ख़राब हो जाएगा, पानी के साथ बह जाएगा पूरा, ठीक है. एंड देन कम्स कटिंग ऑफ ट्रीज़. अगर हम कोई ट्री कट कर रहे हैं तो हम उसकी पूरी रूट निकाल लेते हैं, साथ में जो फर्टाइल सारा सॉइल होता है वो सारा बाहर निकल के आ जाता है, तो सॉइल ख़राब हो गया, राइट. सेकेंड, हैवी रेन. बहुत तेज़ रेन आई, पानी भर गया पूरे में, तो क्या करेंगे, पूरा सॉइल ख़राब, पानी के साथ बह जाएगा. टॉप लेयर जो हमारी फर्टाइल लेयर है वो वैसे ही तो नहीं रहेगी ना. देन स्ट्रॉन्ग विंड्स. बहुत तेज़ विंड चली, बहुत तेज़ हवा चली, सॉइल पूरा विंड के साथ उड़ गया, टॉप लेयर ऑफ सॉइल. सो दीज आर द रीजन्स हाउ द सॉइल गेट्स इरोडेड. सो वी शुड टेक स्टेप्स to not to erode the soil, because it is very important, as I have earlier told you, it is very important for us, and we should not erode it, we should save it, because plants grow in soil, and plants grow होंगे, then only we can live, then only we can breathe, we can survive. Okay, so for today it's over. Now I want to tell you one thing, that please, you are at home, you don't have much work to do, so please study for 1 hour daily. As you all know that the studies are suffering a lot, so please study for 1 hour at least, and don't trouble your parents. Please unki baat mano, what they are saying, follow that. Thank you so much.